4. Number of electron in valence shell. These are 4. You know that these are the 4. Then why it will not show the -4? Because after gaining the 4 electron, it requires the stable configuration of the neon. Then why it will not show -4? Because after gaining the 4 electron, it requires the stable configuration of the neon, which is 2 and 8. In the K cell 2 and in the L cell these are 8. Yes, tell me students, why it cannot show -4? Sir, after losing or gaining, sir? Sir, due to After sir gaining, attraction -4 between the means proton and electrons. Gaining of 4 electrons. देखिए बेटा इसमें क्या होगा, because when the anion it acquires the -4, it is highly unstable because there is a large amount of energy is required to overcome the repulsion, to overcome the force of repulsion between the 4 electron that being added and 6 electron already present in the carbon atom. In the carbon atom, you know that the atomic number is 6. 6 electrons are already present. एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स यू वांट टू ऐड, आप 4 इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड करना चाहते हो, तभी तो वो नियोन का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर पाएगा. तो ऐसा इसमें ये रिपल्सन इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी. ठीक है, ये एक आप ऐसे एग्जांपल भी दे सकते हो, जैसे अगर 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो वही रहेंगे ना. प्रोटॉन कितने रह जाएंगे, 6, और 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना इट इज़ डिफिकल्ट टास्क, जो हमने लास्ट लेक्चर में ये रीज़न दिया था. बताइए क्लियर है ये पॉइंट, why it will not show -4? Because this anion would be highly unstable. And why it is highly unstable? Because large amount of energy is required to overcome the repulsion, force of repulsion between the 4 electron that being added and 6 electron which are already present in the कार्बन एटम. कार्बन एटम में देखिए 6 इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट हैं और 4 इलेक्ट्रॉन्स को आप फोर्सफुली ऐड कराना चाहते हो. सो इट इज ए डिफिकल्ट टास्क. सो इट विल नॉट शो, सो कार्बन विल नॉट शो कार्बन -4, and it will not show carbon, also not show carbon +4. Why it will not show +4? Because after losing it acquire the stable configuration of the helium. completely filled होता है ना, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन द के सेल, डुप्लेट को कंप्लीट करता है ये. सो व्हाई इट विल नॉट शो द +4? बिकॉज cation would be highly unstable due to the large amount of the energy required to remove the 4 electrons. देखिए जैसे यहाँ से क्या करना, हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना है. So there is required a large amount of energy, and to gain the 4 electron there is also requirement of a large amount of energy. Yes, tell me students, loss of 4 electrons. So carbon share, thus we can say that carbon share its electron with other atom, and it will show the valency is tetravalent. Tetravalent in nature. सर एक बार बॉन्ड्स और बता दो, जैसे सर जैसे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ऐसे ऐसे तीनों टाइप के बॉन्ड्स बता दो सर एक बार. कौन कौन से होते हैं आप मुझे नाम बताइए. कोवेलेंट बॉन्ड, one is the ionic bond, yes, and one is the dative. कोऑर्डिनेट बॉन्ड सर. हाँ हाँ, डेटिव कोई कोऑर्डिनेट बोलते हैं बेटा. समीर आ गया सर, ज्वाइन कर लो सर. ओके कर दिया बेटा, समीर को जरूर कर देंगे एडमिट. ठीक है, देखिए फर्स्ट वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शॉर्ट में हम इसको बताते हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. आयनिक बॉन्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये अपना माइक ऑफ कीजिए, स्टूडेंट का माइक ऑन. एंड डेटिव बॉन्ड इट इज आल्सो बाय द शेयरिंग, बट how it will be share? Electrons which take part in the bonding from only one atom, only from one atom. Which apparatus?
देखिए, इन केस ऑफ द फर्स्ट शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन मीन्स इफ ए एटम and these are the B atom, one electron here, one electron towards the B, so both these atoms share electron with each other. इस तरह से they will share with each other, so there is formation of the bond, this is called as the covalent bond. इसको हम थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, जस्ट इसके टाइप्स हम बता रहे थोड़ा सा. सेकेंड हमारा आयनिक बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द लॉस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल इन केस ऑफ द NaCl. ये बेटा आपने पहले स्टार्ट करा दिया थोड़ा सा, इसको डिटेल बाद में हम स्टडी करेंगे. Na प्लस एंड Cl माइनस. एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन विच जैसे ए एटम 2 इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयर करता है इस तरह से, और बॉन्ड ये इस तरह से एरो से शो करेंगे. जो एटम इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है या शेयर करता है उसके पास क्या आएगा, टेल आएगी. इस बॉन्ड को हम डिनोट कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेट रोटेटिव बॉन्ड. दिस इज ये इस तरह से ये एरो लगाएंगे यहाँ जैसे ए एटम एंड दिस इज अवर बी एटम. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी बताइए बेटा, कार्बन इज टेट्रावैलेंट. गॉट दिस बिकॉज कार्बन हैव 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, so it share its electron with the other atom to form the tetravalence. Yes, tell me students, clear? Yes sir. Which chapter it is? Yes, sir. Okay. Carbon and its compound. Okay, now is the covalent bond which is formed by the sharing of electron. Now next is the types of the covalent bond. सर एक बार सर वो बता दो सर, कैटिनेशन. अभी आएंगे बेटा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप, इसमें चैप्टर में आगे मत जाइए, सारी प्रॉपर्टीज आएंगी. टाइप्स ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड. कोवलेंट बॉन्ड्स आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स. कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते जाते लंबी चेन बनाएंगे, उसको कैटिनेशन बोलते हैं. किसी भी एटम की ऐसी प्रॉपर्टी तो लंबी चेन बनाए आपस में बॉन्डिंग करें, दिस इज कैटिनेशन. 3 टाइप्स. वन इज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड. Single covalent bond, the bond in which the 2 electrons take part, या 2 electrons are share between the 2 atoms. इस तरह से 2 atoms के बीच में क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग आएगी. दिस इज कॉल्ड एज द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड and it is represented by a single line like this between the A and B. This is the single covalent bond. Tell me students, in which atom this is present? Hydrogen. It is present NaCl. No, NaCl is ionic. In case of this, it is Hydrogen, sir. H2. In case of कार्बन the hydrogen, टेट्रा. Cl2, there is formation of the covalent bond. Okay. In case of carbon, carbon also present single covalent bond. Second is the double covalent bond. When 4 electrons are shared between 2 atoms, 2 from this atom and 2 from this atom, and to complete their octet, like as there is formation of the double bond. In between them there is formation of the double bond. Tell me students, Example an MgCl2. example A double bond B. Oxygen. In case of the double bond, it is O2. CaCl2, sir. CaCl2. Why it is CaCl? Oxygen. In case of oxygen, it forms the double bond. You know, in O2 molecule. O2 molecule is formed by the oxygen atom, and this is our second oxygen atom. Now you know the oxygen atomic number is 8 and 8. In the K and L cell, electrons present are 2 and 6. These are 2 and 6. Now electron in the outermost cell, these are 6. In this, electrons are 6. Right students? Now this oxygen atom 6 electron, 2, 4 and 2, 6. 2, 4 and 2, 6. Now to complete its octet, 2 electron from each atom required to complete its octet. ये देखिए इस तरह से ऑक्सीजन क्या कर लेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा. बताइए बेटा. So you can say that in this case oxygen form the double bond and it will be like O double bond O, or you can simply say that the O2 molecule.
Yes, clear? Yes, sir. Yes, And sir. okay, valency of the oxygen is divalent because it's have two electrons shared, two electron. Yeah, two electron pairs are shared between two oxygen atoms. Now is third is the triple covalent bond. Triple, what do you mean by the triple bond? When between the two atoms, three electrons are shared between the A and B, three electrons are shared, then it Excuse me, will, sir. Six. yes, Six, sir. Six. सर O3 में क्या है? O3 में क्या है? O3 में एक साइड में डबल आएगा, एक साइड में हमारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन ए और बी एटम्स ने कितने, तीन तीन इलेक्ट्रॉन। इसका कोई एग्जांपल बताइए बेटा। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, सर. Nitrogen, sir. Nitrogen, sir. Yes, it is nitrogen molecule, N2 molecule. N2 molecule is formed from the two atoms, nitrogen and nitrogen atom. What is the atomic number of nitrogen is? 7 and 7. Seven. Electron present in the K and L cell. These are 2 and 5. Electron present are 2 and 5. Right? Now, students, this is nitrogen atom, 5 electron in the outermost cell. So you can show like this, 5 electron in the outermost cell. Now, to complete its octets, what is the number of electron required? 5 plus 3. 3. So it will complete its octet like this. Here it also complete its octet like this. So it will form the nitrogen triple bond nitrogen, or you simply can say that it is N2 molecule. Right? So these are the three types of the covalent bond. If there is three electrons or three shared pair of electrons are present, then it will form the triple bond. And if two electron, then O2. And if single electron, then it is single covalent bond. One more point, students. Sir, एक और example इसका इसका सर एक और एग्जांपल इसमें ट्रिपल वाले में कोई ज्यादा शो नहीं करते, ये नाइट्रोजन वाला ध्यान रखिए आप। एक पॉइंट है होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, what are homoatomic molecules? होमो मीन्स होता है हमारा इट इज सिमिलर, atomic means atoms, the molecule which is formed by the similar type of the atoms. Can you tell me such kinds of examples? The molecule which is formed by the similar CH4. Methane. heteroatomic. Methane, who is saying methane? Methane is homoatomic or heteroatomic? Hetero means it is different atoms. ऑक्सीजन. Example for that, homo means similar type of the atom, the molecule which are made up of only one kind of atom. Many examples: H2, O2, Cl2, Br2, I2, N2, F2, all these are. देखिए O3 is also similar type of the atoms, three oxygen atoms. So you can say that the molecule which is formed by the similar atoms, this is called as the homoatomic molecule. And heteroatomic, the molecule which is formed by the different types of the atoms. So you call it as a heteroatomic molecule. Right, students? Yes, there are many examples. CaCO3. Any more? Methane. ClH4. CO2H2O, CO2. all these are the examples. Yes, CO2, ammonia. Yes, all these are the examples. Right? So this is the homoatomic and heteroatomic molecule. Now, students, there is a property of covalent compounds. The compound which are, what are covalent compound? The compound which are formed by the mutual sharing of electron. म्यूचुअल शेयरिंग, अभी हमने बोला ना कि ए और बी में क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, दे आर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम, दे आर म्यूचुअली शेयर्ड. सो दिस इज कॉल्ड एज द म्यूचुअली शेयरिंग. द बॉन्ड या कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज द कोवलेंट बॉन्ड. Hence it is called as the covalent compounds. And covalently bonded atoms have strong bond within the molecules, but their intermolecular forces of attraction are weak.
जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कोवलेंट कंपाउंड्स का क्या होता है, थोड़ा सा लो होता है. But during the formation of covalent bond, only electrons are shared between the two atoms. No charge particle are formed. चार्ज नहीं बनता, ये पॉइंट याद रखना. इन केस ऑफ द कोवलेंट कंपाउंड सिर्फ इलेक्ट्रॉन शेयर किए गए दो एटम्स के. देयरफॉर कोवलेंट कंपाउंड आर जनरली बैड कंडक्टर. क्योंकि अगर हमारा कंडक्टिविटी को शो करना है तो हमें कौन से कंपाउंड्स की रिक्वायरमेंट होगी, देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ द आयनिक कंपाउंड. ठीक, तो आज हमने बेटा इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया. वन थिंग इज द कार्बन इज टेट्रावेलेंट. पता लग गया क्यों टेट्रावेलेंट. कार्बन +4 या -4 क्यों नहीं शो करता, इसके बारे में हमने स्टडी किया. कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवलेंट. और फिर हमने स्टडी किया लास्ट में बोले सर बॉइलिंग और मेल्टिंग. यस सर. आयनिक हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. अब वो सर जो लास्ट में बताया ना सर, उसका होता है सर आप लास्ट में क्या बोले सर? सर वो लास्ट में क्या बोले? यस सर, वो कोवलेंट बॉन्ड्स या कोवलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो सर उससे पहले बोले ना सर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के बारे में और बॉइलिंग पॉइंट. ओके ओके, देखिए मैं बता रहा हूं, कोवलेंटली बॉन्डेड मॉलिक्यूल्स हैव स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल के अंदर इनके बीच में बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी. बट देयर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगी वो क्या होगी, वीक होगी. ठीक है बेटा, मीटिंग को मैं एंड कर रहा हूं. जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है कोवलेंट कंपाउंड. थैंक यू ठीक है बेटा. ओके सर.